All right. Assalamu alaikum. Welcome to Data Mining Task and Techniques. So today is lecture 8 of this course. So we are ending the fourth week of the semester. So today we will discuss the frequent pattern growth algorithm for frequent item set mining. We started the basic introduction for this algorithm last time. So we will discuss the algorithm with an example. It has a few concepts that are different from the a priori algorithm, and that makes it much more efficient in practice as compared to the a priori algorithm. So after that, we will talk about interestingness measures for frequent patterns. Uh, so, so those, so evaluation that's primarily meant for evaluation, and evaluation, as you know, is very important in data mining as well as machine learning. So without evaluation, you cannot be sure what you're getting. So evaluation is very important. So we'll be discussing evaluations and some issues regarding these interestingness measures as well. So that is primarily the agenda for today. So any questions? So maybe I can start with this slide. So if there are no questions. Sorry. So previously we had discussed the a priori algorithm, which was level-wise candidate generation and test algorithm. And the level-wise is best visualized by using the item set lattice. So set lattice is a lattice which has one item set, two item set, three item sets, four item sets, and there are lines between the one, two, three, between each number of item sets, showing how each next level is generated from the previous level. So, so that was candidate generation and test, and it was, as I said, breadth first. It would generate all the item sets at one level before going to the next level. So, meaning that all one item sets before going to the all two item sets, and in general, all k item sets before going to the k plus one item sets. So, so it required multiple passes over the database, which was always very costly. And the candidates that were generated can also become very large, so that is also an overhead. So the frequent pattern growth uses a different approach. It uses a depth first approach. Uh, it takes an item and then grows that item until it cannot grow it any further, meaning that if you have started with a, it will find the next bigger pattern that contains a. Let's say it is ac, and then it will find the next bigger pattern that contains AC, let's say ACD, until you cannot find any more further patterns. And then it goes to the next single pattern, let's say B, and start generating patterns that contain B and those that contain longer longer patterns that contain B. So it's a depth first. So start A से शुरू करेंगे तो A को complete करेंगे, we're going to the next one. And along the way it uses compression. And of course, along the way, it uses database projection, which we discussed last time. And that database, that projected database is also compressed using what is known as FP tree. ठीक है? So projection से हमने last time देखा था कि you get a partition that contains only that item on which you have projected. उसमें से आप जब frequent item set ढूंढते हैं, you can simply grow that item by adding those item sets. ठीक है? So and it does this recursively, so that's why this is a divide and conquer algorithm.
So let's uh, go over an algorithm, go over the algorithm with an example so that you understand how it works. So FP algo. So this algo was proposed in 2000 or 2001, and it is quite popularly used in practice nowadays for frequent pattern mining. Right. Uh, so I think I will go over an algorithm example that would be the best approach. So example is available in these slides. I will use the ones that I have prepared myself in a doc file, which I have also uploaded. वो मैं शेयर कर देता हूँ. What happened? All right. Somehow my computer is running slow today. I don't know why. All right. All right. Can you see this document? So we want to find all frequent item sets in a small database that we have given a transactional database, and the minimum support is 30%. ठीक है? So this is the transactional database. So there are eight transactions. So the first thing is since we are doing it on by hand, तो हमने 30% का काउंट निकालना है. तो एग्जैक्टली कितने काउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस वुड लीड टू ए पैटर्न बीइंग फ्रीक्वेंट. सो 30% ऑफ 8 वुड बी 2 पॉइंट समथिंग. सो हमने इसकी सीलिंग लेनी. ऑब्वियसली पॉइंट्स पे तो नहीं चल सकता. दिस इज गोइंग टू बी एन इंटीजर. सो सीलिंग लेंगे तो दिस विल गिव अस 3. So three transactions, if three or more transactions contain an item set, then it's going to be frequent. So this is the problem. You can of course apply a priori to this algorithm as well, but we are using this algorithm to show the use of FP growth. Okay. So somehow actually ना मेरा आज screen reader slow चल रहा है. I apologize. बीच में सो जाता. I don't know what's happening. Okay. All right, so the first step in FP growth is you scan this database and find all frequent one item sets. So frequent one item sets, you scan the database and find the frequent one item. So this is the same step that you have for a priori. So ये table है, इसमें items A, B, C, D, E तक हैं. So we will scan them and count the number of times that A occurs, B occurs, C occurs, D occurs, and E occurs. And we will remove any single item that is not frequent, obviously, because it's a superset पे frequent नहीं होगा, a priori property है. Plus, we will rank these single items in frequency descending order. ठीक है? So this is an idea that's used for compression. Remember, we are trying to find frequent item sets, and we will use this notion of items that are more frequent and save space while we are building a tree, as we will see. Okay? So So the F list जिसको कहते हैं frequency descending list जो होती है, this is a list of frequent one item sets in frequency descending order. तो ये B6 है, D6 है, A5 है, E4 and C3 है. Obviously, if there was some other item, single item, let's say
इसमें एफ भी होता बट इट वाज ओनली अकरिंग 2 times, we will not add it in this list because it was less than the minimum support of 3. ठीक है. So we have now done one pass and created the F list. Sometimes this is also called the header list for the FP tree. तो ट्री बनेगा इसके बाद. ठीक है. अब जहाँ टाइज हो रहे हैं जैसे बी और डी दोनों 6 हैं तो यू कैन ब्रेक दैट टाई आर्बिट्रेरीली, बट वंस यू हैव फिक्स द ऑर्डर वो ही आपने फॉलो करना है. बी हमने पहले लिखा है और डी बाद में लिखा है, दोनों 6 हैं. ठीक है. सो नाउ यू डू ए सेकंड पास. एक पास तो हो गया. नाउ यू डू ए सेकंड पास ओवर द होल डेटाबेस एंड while you read each transaction, you order that transaction in the F list order and then insert it into a FP tree, frequent pattern tree. ठीक है? So this would be the compressed database. So these were the items. उसके आगे एक कॉलम बना दिए जिसमें ऑर्डर्ड आइटम्स भी हैं और इसमें वही आइटम्स उस ऑर्डर में लिखे हुए हैं. So BDA, so BDAE उस ऑर्डर में है. ऑब्वियसली इसमें सी नहीं था तो वो नहीं आया. सो ये हमने पहला ट्रांजैक्शन पढ़ी उसको उस ऑर्डर में किया एंड देन वी इंसर्ट इन एफपी ट्री. सो एफपी ट्री इज सिंपली ए ट्री दैट स्टार्ट्स विद अ नल नोड और उसके बाद पूरी ट्रांजैक्शन आपने ऐड कर देनी है. तो वो ट्रांजैक्शन क्या है, बी डी ए ई. सो बी का काउंट 1 है, ए का काउंट 1 है. बी का नोड क्रिएट करेंगे उसका काउंट 1 कर देंगे. ए का नोड ऐड करेंगे काउंट 1 कर देंगे. डी का करें, ए का करें, ई का करें. सो यू विल नाउ हैव वन पाथ इन द ट्री. So now we go to the second transaction. इसमें सी भी है बट यू नोटिस कि जो पहला वाला पाथ है वो रिपीट हो रहा है. दैट इज वेयर वी गेट द कंप्रेशन. सो अब हमने नल से स्टार्ट किया और बी देखा कि पहले वहाँ है तो उसका काउंट 2 कर दिया. रेदर देन एडिंग ए न्यू नोड वी सिंपली इंक्रीज इस काउंटर. उसके बाद देखा डी है, डी भी पहले भी था उसका भी काउंट 2 कर दिया. उसके बाद ए है उसका काउंट इंक्रीज कर दिया. ई है उसका काउंट कर दिया. सी एंड पे आ गया उसका काउंट 1 हो गया. तो ये सारा ट्री हम इस तरह बनाते जाएंगे. तो ये जो दो ट्रांजैक्शन, लेट मी शो यू सेपरेटली ऑन द नोड्स. सो पहली ट्रांजैक्शन क्या थी, बी डी ए ई और दूसरी थी बी डी ए ई सी. तो हमारा जो नल एफ पी ट्री है वो नल से शुरू होता है. ठीक है. और हमने ये ट्रांजैक्शन उसमें इंसर्ट करते रहना है. ठीक है. सो वी हैव फर्स्ट बी वन पहला ऐड हुआ. डी वन, ए, सॉरी, ठीक है, ए वन और फिर ई वन. तो ये हमने पहली ट्रांजैक्शन ऐड कर दी. ठीक है. ना जब हम दूसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं उसमें भी पहले बी आ रहा है. सो वी ऑलरेडी हैव ए बी देयर. तो इसमें 2 कर दिया हमने इसको. उसके बाद डी आ रहा है इसको 2 कर दिया. ए आ रहा है इसको भी 2 कर दिया. इसको भी 2 कर दिया. और उसके बाद सी आ रहा है विच वी डू नॉट हैव हेयर. सो वी ऐड अनदर सी वन हेयर. ठीक है. तो दो ट्रांजैक्शंस हमने डाल दी and we have not lost any information from the original transactional database while we create this tree, and lost any information in the context of frequent pattern mining. तो हमने इस जो भी मैंने छोटा सा ट्री बनाया है इसमें वो दोनों ट्रांजेक्शन अवेलेबल है. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम सी और वापस प्रीफिक्स सारा इसको अपलोड करें यू गेट बी डी ए सी, बी डी ए ई सी. तो ये पूरी पाथ आपको मिल जाएगा. उसका काउंट 1 है.
फिर आपके पास ऑब्वियसली एक एक वन रहेगा, तो डी से आप जब शुरू करेंगे उसमें से आपको एक और दूसरा मिल जाएगा, बी डी ए ई, उसका भी काउंट वन है। वो बाकी जो रिपीट हो रहे हैं उसका टोटल काउंट टू हो जाएगा। ठीक है। सो यूजली जो एफ लिस्ट है आपकी, जिसमें सारे ये ऑर्डर्ड आइटम्स हैं, उसमें जो भी आइटम है वो पॉइंट करता है टू इस ट्री पे जहां वो स्टार्ट हो रहा है। एफ लिस्ट हमारी क्या थी इसकी? हमारे पास बी सिक्स था, डी सिक्स था, ए फाइव था, फिर ई फोर था और सी थ्री था। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज ए लिस्ट। और फिर सी, जो तीन सीज आ रहे हैं वो आपको पॉइंट करेंगे। यहाँ अभी अब एक ही आया तो उस सी को पॉइंट करेगा, कोई और भी है तो उसको भी पॉइंट करेगा, सो दैट यू कैन ऑलवेज ट्रैवर्स दिस ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम एन आइटम इन द एफ लिस्ट। तो इसको हेडर लिस्ट कहते हैं। ठीक है। So you can create the complete tree by scanning each transaction, and hopefully this tree would be small so that it fits into memory. If it fits into memory, then you can scan this or find all future frequent item searched from this tree only without doing an external scan. ठीक है। So this is something like जो हमने partitioned ए प्रारी की बात की थी, उसमें दो स्कैन करते हैं, इसमें भी दो स्कैन हो जाएंगे, especially if this FP tree fits in memory. Fits in memory नहीं होता तो then of course you have to manage the memory uh, through an external store, but still it's going to be much smaller than a database that has all these item sets as a regular transaction. So this tree would be of much smaller size. So let's say just take an example. ठीक है। So let's say एक और मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ। So let's say मेरे पास एक और ट्रांजेक्शन है DAE। तो अब इसका क्या करेंगे हम? We start from the null node, और नल के बाद हमने देखा कि नेक्स्ट जो अभी एग्जिस्टिंग हमारे पास नोड है वो बी है, डी नहीं है। सो वी विल हैव ए न्यू पाथ, एक नया पाथ बन जाएगा, डी वन ए वन ई वन, बिकॉज दिस इज नॉट रिपीटेड। तो इस तरह आपके पाथ्स मल्टीपल बन सकते हैं इफ ए नोड इज नॉट रिपीटेड at any given point in the FP tree. ठीक है। But since we have done frequency descending order, there is very strong chance that nodes would be repeated and the total size of the FP tree would be much smaller than the size of the original transactional database. Okay. So any questions so far? दो स्कैन्स किए, पहले स्कैन में फ्रीक्वेंट वन आइटम सर्च ढूंढे, उसको फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, और सेकंड स्कैन किया, हर ट्रांजैक्शन को उस ऑर्डर में पहले लेके आए और फिर एफपी ट्री में इंसर्ट कर दिया। So after the second scan, we have the complete transactional database as an FP tree. And this FP tree would take up much lower memory as compared to the original transactional database, because we have used the frequency, so the high frequency terms or nodes are repeated. But we have also not lost any information for frequent item set mining. So by the way, ये Trika, this is a way of doing data compression for data reduction. Remember, we talked about data reduction in while we were discussing data preprocessing. So this is compressing the data set using a specific approach and still being able to do your data mining. Okay.
ऑलराइट, सो नाउ ये हो गया। अब हमने सारी माइनिंग इस ट्री के ऊपर करनी है रिकर्सिवली। यू कैन थिंक ऑफ दिस ट्री एज योर न्यू ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। तो इसके ऊपर आपने अब पार्टीशन एंड प्रोजेक्शन से, जो डेटाबेस प्रोजेक्शन है, दिस इज योर डेटाबेस, अब इसको प्रोजेक्ट करके आपने ग्रोथ से पैटर्न ढूंढने हैं। So now let me go back to my example. तो यहाँ आपको एफपी ट्री नज़र आ रहा होगा। आई एम नॉट टू श्योर ये सही है कि, बिकॉज आई कन्वर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट, पीडीएफ में ये सही होगा होपफुली। सो दिस इज द कंप्लीट एफपी ट्री। Okay, so now we basically find frequent patterns from this database, which is a compressed representation rather than the original database. And we use the depth first approach. So what is the last item in the F list? It was C. C, C, which had a count of 3. So we will find all patterns or all transactions that contain C from this FP tree. So remember I said ये C के साथ pointers भी होंगे, header list के pointers भी हैं. So we will have pointers to all nodes that are C in this tree. So from this tree, we now collect all the prefixes, meaning that C तो उसमें आ ही रहा है, but उसका पिछला part क्या है? ठीक है ना, C तो उसमें आ रहा है. Now we find the पिछला part. So that is called the conditional pattern base, the base of the pattern or the prefix of the pattern. It will contain C at the end. So, so BDAE. So this is, if you look at the C that we had, C1 के पास ऊपर जो prefix था BDAE था. So it was occurring 1 times if you include C also. ठीक है. So ये हमने उसका base लिखा, C नहीं इसमें लिखा. So that's why we called it pattern base. Of course C लिख सकते हैं, but ये convention है कि we do not include the item on which we are projecting. By the way, this is the projected database. हमने C के ऊपर प्रोजेक्ट किया और ये सारे वो ट्रांजैक्शन जिसमें C आ रहा है. ठीक है, ये सारी वो ट्रांजैक्शन है जिसमें C आ रहा है. सो BDAE एक दफा आ रहा है विथ C, B एक दफा आ रहा है विथ C, BAC भी एक दफा आ रहा है. सो दिस इज नाउ द प्रोजेक्टेड डेटाबेस, बट वी ऑल्सो कॉल इट द कंडीशनल पैटर्न बेस फॉर C. ठीक है. अब इसमें हमने फिर वही प्रोसेस पूरा रिपीट करना है जो हमने पहले किया था ओरिजिनल डेटाबेस के साथ. इस ट्री में आपने एफ लिस्ट, इस डेटाबेस में आपने एफ लिस्ट ढूंढनी है. व्हाट आर द फ्रीक्वेंट आइटम्स इन फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. सो बी अकर्स 3 times, बट बाकी जो है ए और जो थे, और आई थिंक ई भी आ रहा था और डी भी आ रहा था, ऑल ऑफ देम इज लेस देन 3 times, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एफ लिस्ट. ठीक है. सो अब ये मेरे पास एफ लिस्ट है. अब इस एफ लिस्ट से इस डेटाबेस को फिर एक एफपी ट्री बना दिया. ठीक है, विच वी कॉल द कंडीशनल एफपी ट्री बिकॉज कंडीशन ऑन सी. अब इसमें सिर्फ बी था, सो सिंपली नल एंड बी ट्री आ गया आपके पास. सो इट हैज जस्ट वन पाथ एंड वन नोड विथ 3 काउंट. हमने वो बी डी ए ई बी और बी ए सी सारे किए, तो बाकी उसमें सारे B1 B2 B3 हो गया. ठीक है. और ये हमारा कंडीशनल था सी का. अब हमारे पास और एक एक ट्री आया विच इज जस्ट वन पाथ. जब एक पाथ आया, यू कैन जनरेट ऑल पैटर्न्स फ्रॉम दिस. व्हाट आर द पैटर्न्स दैट यू कैन जनरेट?
बिकॉज सिंस यू हैव बी और ऊपर सी था तो BC3 आपके पास आ गया, एंड ऑफ कोर्स C3 जो ओरिजिनल था वो भी आपके पास है. रिमेंबर दिस इज अ कंडीशनल पैटर्न बेस ऑफ सी. हर के साथ सी आ रहा है, उसमें बी भी आ रहा है, इसका मतलब BC भी 3 दफा आ रहा है. सो कंडीशनल पैटर्न बेस ऑफ सी में बी 3 दफा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हर बी के साथ सी भी 3 दफा आ रहा है. दैट्स व्हाई वी गेट द पैटर्न BC. सो वी हैव ग्रोन दिस. सी को हमने ग्रो कर दिया बाय एडिंग बी. सो दिस पाथ और दिस रिकर्शन हैज कंप्लीटेड. फर्दर नहीं जा रहे हम. नाउ वी गो बैक टू द ओरिजिनल एफ लिस्ट, और उसमें देखा नेक्स्ट हमारे पास आइटम क्या था. नेक्स्ट आइटम हमारे पास ई था, सी के बाद ई था, ई का काउंट 4 था. सो नाउ ऑन द. So the frequent patterns, that's the whole idea of projected databases. So that's, so हमने क्या किया, we found C3 का हमने कंडीशनल पैटर्न बेस फॉर C. ठीक है ना, और उसकी काउंट 3 था. ठीक है, और हमारे पास इस डेटाबेस को जब हमने FP ट्री बनाया इसका, वो सिंपली ये बना B3. ठीक है. So what is this database? This database is the condition, is the projected database that contains C, but of course C हमने यहाँ लिखा नहीं है. मतलब इस डेटाबेस को मैं वैसे लिखूं तो ये क्या होगा, बी सी और BC. ये डेटाबेस है. बी आपके पास 3 दफा आ रहा है, और हमको पता है कि हर ये वो वाला डेटाबेस जिसमें सी भी 3 दफा आ रहा है. तो ये बी सी 3 दफा आ रहा है इसका. ऑब्वियसली फ्रॉम हेयर वी नो दैट BC का काउंट 3 है. दिस इज द पैटर्न दैट वी फाउंड. एंड ऑफ कोर्स ये हमारा पीछे से हम जो चल रहा था हमारा रिकर्शन, हमको पता था C भी 3 है. बोथ ऑफ देम आर फ्रीक्वेंट. सो दिस इज एक्चुअली द प्रोजेक्टेड DB. और दिस इज ऑफ कोर्स द कंडीशनल FP ट्री. कंडीशनल FP ट्री में C हमने नहीं लिखा. बाय द वे इसमें आप C डाल देते हो, प्रोजेक्टेड डेटाबेस बनाना था तो ये बनना था 3. बट हमने, वी नो के हर इस पाथ में इसका जो फॉलोइंग नोड होगा वो C होगा, बिकॉज वी से इट्स पैटर्न बेस और प्रीफिक्स. वो अगला वाला हमने लिखा नहीं है. सो इज दैट क्लियर? सो आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड ए पाथ, सी को हम फर्दर अब नहीं कर सकते. सी के सारा ग्रोथ हमने ढूंढ लिया. सी था और BC था, बस. इससे ज्यादा नहीं हम जा रहे. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम्स. कंडीशनल पैटर्न फॉर नेक्स्ट क्या था हमारा, ई था. ई का काउंट 4 था. अब इसका हमने कंडीशनल पैटर्न बेस पहले निकालना है, विच इज ए प्रोजेक्टेड डेटाबेस दैट डू नॉट कंटेन ई. सिर्फ उसका प्रीवियस पार्ट है, वो उस ट्री से हम निकाल सकते हैं. उसके बाद हम उसी ट्री को कंप्रेस कर देंगे, उसी डेटाबेस को कंप्रेस कर देंगे. कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री. इट्स द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ दैट कंडीशनल पैटर्न बेस. और फिर इसके ऊपर हमने फिर सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट ढूंढने हैं. इफ इट वाज वन पाथ, हम सारे जिस तरह पीछे हमने ढूंढा था मिल जाएंगे. बट लेट्स से इट वाज अ बिग ट्री, तो इसके ऊपर एक फर्दर रिकर्शन हो सकती है. इसमें जो एफ लिस्ट आएगी उससे फिर हम इसको फर्दर प्रोजेक्ट करेंगे. सो यू कैन सी दैट इन द एग्जाम्पल नेक्स्ट में. सो नेक्स्ट इज E4. तो E4 हमने देखना ओरिजिनल हमारे FP ट्री में ई कहाँ कहाँ आ रहा है, उसका प्रीफिक्स लिख दिया हमने. ये मैंने लिखा हुआ है. सो यू कैन थिंक ऑफ दिस
you can think of this as a projected database without E. So that's why we call it the conditional pattern base. अब इसका F list हम बनाएं. A सबसे ज्यादा दफा आ रहा है इस डेटाबेस में 4. So A, B, and D. So A occurs 4 times, B3 and E3. E3 नहीं होगा. C, D3, B, D3, A, B, D. अब इस डेटाबेस को फिर ट्री में डाल दिया. लुक एट ईच ट्रांजैक्शन, ऑर्डर दैट ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू ए बी डी एंड पुट इट इनटू ए ट्री. ये ट्री क्या बनेगा? ए, तो ए आया, हमने सारी ट्रांजैक्शन डाली. सो पहली ट्रांजैक्शन जो थी वो उसमें आई, और उसमें एक पाथ एक साइड से भी निकल रहा है, D3, D2. So now you notice that this tree that we got is not let me get your question. पूरा मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया. Yes, the process is repeated. Remember, this is recursion. The same process is done. In the original process, हमने हमारे पास ओरिजिनल ट्रांजैक्शनल डेटाबेस था, उसकी एफ लिस्ट निकाली, उस एफ लिस्ट से हमने उसको कंप्रेस किया. अब बाद में जब हमने उस एफ लिस्ट से कोई भी आइटम लेकर, यूजली हम एंड से शुरू करते हैं बिकॉज हमने कोई पैटर्न ब्रेक नहीं करना, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे. जहां हमने सी से शुरू किया, सी से हमने उसको प्रोजेक्टेड डेटाबेस उसका बनाया, उसको उस ओरिजिनल डेटाबेस को प्रोजेक्ट किया ऑन सी. उसको हमने कहा कंडीशनल पैटर्न बेस, और उसको फिर भी कंप्रेस किया, वही जो हमने पहले किया था, एफपी ट्री विच वी कॉल कंडीशनल एफपी ट्री. और उसके ऊपर फिर हमने माइनिंग की. सो अगेन वो प्रोसेस रिपीट हुआ. उसकी अपनी एक एफ लिस्ट बनेगी, इसकी अपनी बनेगी सेकंड पार्ट की, और उस हिसाब से वो ऑर्डर होगा. सो फॉर एग्जाम्पल इस केस में जब आपने ई पे किया तो एफ लिस्ट ए बी डी बनी, नॉट द ओरिजिनल वन. अब हमने इसको ए बी डी के हिसाब से एक ट्री बनाना है. So A ऊपर आ रहा है because this is most frequent in this projected database. But you notice that now this tree is not a single path. तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से सारे ग्रोथ पैटर्न नहीं ढूंढ सकते. We have to repeat. So this is where the recursion occurs. अब हमने इस नई एफपी लिस्ट से लास्ट आइटम लेके फिर फर्दर प्रोजेक्ट करना है. So now we have to लास्ट इसमें आइटम क्या था? डी था, और ये ऊपर क्या चल रहा था? ई था. सो डी ई 3 के साथ हम बेसिकली इस पार्टीशन डेटाबेस को फर्दर हम डी से पार्टीशन कर रहे हैं. अच्छा, ओके. बाय द वे, ये आपको फिगर सही नजर आ रही है इधर? तो सो समवन हैज टू अनम्यूट, एंड इस मेरे साथ ये करना पड़ेगा बिकॉज आई कांट सी दिस फिगर. कैन यू सी दिस फिगर? जी सर, नजर आ रही। सही फिगर आ रही है? ठीक है. तो सबसे पहले तो हम सी का करते हैं. हाउ डू यू फाइंड ऑल द प्रीफिक्स पैटर्न्स दैट कंटेन सी? तो आपने इस ट्री में देखना कहाँ सारे सी आ रहे हैं. तो कैन समवन हेल्प मी? एक सी तो मुझे पता है, बी डी ए ई के बाद एक सी आ रहा है, राइट? बी डी ए ई के बाद एक सी आ रहा है, तो इसका जो प्रीफिक्स बनेगा BDAE1. सी नहीं लिखेंगे हम बिकॉज हमको पता है कि इसमें सी है, ऊपर हमने पहले प्रीफिक्स दिया हुआ है. बट दिस इज 1 सी. और बताएं कहाँ सी आ रहा है? समवन? बी के बाद डायरेक्टली सी आ रहा है। डी के बाद फिर सी आ रहा है, ठीक है ना? उस सी का काउंट क्या है?
वन। 1 है, तो इसका मतलब है इसका जो प्रीफिक्स बेस है वो B1 है, बिकॉज इसके बाद BC1 है। तो ये दूसरा हो गया हमारे पास। इसके अलावा एक और कहाँ आ रहा है, बिकॉज C3 है, एक और भी होगा। BAE। सो BAE के बाद फिर एक C1 आ रहा है, तो इसका इसका प्रीफिक्स BAE है, उसका काउंट भी 1 है। बिकॉज ये C डाल देंगे तो ऑब्वियसली उसका भी 1 है। हमने C नहीं लिखा, मेनली ये है कि C नहीं लिखा बिकॉज वी से इट्स ए पैटर्न बेस या प्रीफिक्स है उस C का। ठीक है। रिमेंबर जब हम प्रोजेक्टेड डेटाबेस मैंने कल या लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें हम वो आइटम लिख रहे थे। ये कंडीशनल पैटर्न बेस इज द सेम थिंग, बट वी डू नॉट राइट दैट आइटम, इट्स जस्ट ए कन्वेंशन। वो इट्स नॉट एन इशू, हमको पता है कि उसके अंदर वो इतनी दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ इस तरह ये आ रहा है, तो इसी इसी के लिए आप इसी नेक्स्ट का देखते हैं, ई को देखें ना। E4 था। अब मुझे बताएं कि ई के कितने पार्ट्स हैं यहाँ। एक तो BDAE है, ई का काउंट क्या है उधर, BDAE का, समवन टेल टू। मी। ठीक है ना, बी ई का काउंट 2 है, इसका मतलब इसका जो प्रीफिक्स बनेगा BDA2 होगा, बिकॉज BDAE टुगेदर ऑल टुगेदर 2 आ रहा है, सो BDA2 लिखा होगा। तो इसके अलावा और कहाँ ई आ रहा है। तो BAE। तो BAE, इसमें ई का काउंट क्या है, वन। इसमें 1 है, इसका मतलब BA1 होगा। तो ई हमने 3 काउंट कर लिए, एक और भी होगा। DAE। एक और BAE नहीं आपने कहा, अच्छा DAE, सॉरी, एक DAE भी है। ठीक है ना, इसका मतलब DA भी 1 है, BA भी 1 है, और BDA2 है। तो आप देख लें कि यही हमने पैटर्न बेस यहाँ लिखे हुए आगे। ठीक है ना, तो ये कंडीशनल पैटर्न बेस है, यहाँ से इस तरह निकलता है। ठीक है, सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज द कंडीशनल पैटर्न बेस फॉर ई, और द प्रोजेक्टेड डेटाबेस दैट कंटेन ई। और ये भी एक डेटाबेस है, इसको उसी जिस तरह पहले तरीके से इसकी अपनी एक एफ लिस्ट निकलेगी, इसको अपना हम कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, ये ABD हमारे पास इसकी अपनी एफ लिस्ट बनी और इसका अपना FP ट्री बना। नाउ सिंस दिस FP ट्री इज नॉट ए सिंगल पाथ, ये हमारी रिकर्शन यहाँ खत्म नहीं हो रही। तो वी नीड टू डू ए फर्दर, वी गो नीड टू डू ए फर्दर डेप्थ इनटू जाना पड़ेगा। अब इस एफ लिस्ट में इसको फर्दर प्रोजेक्ट करेंगे। इसका लास्ट क्या था, डी था। डी इसमें 3 दफा आ रहा है, और पीछे इसके ऊपर ई था, वो 4 दफा आ रहा है, तो ऑब्वियसली DE 4 दफा तो नहीं आ सकता, 3 दफा आएगा। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर। ठीक है, अब इस डेटाबेस में हमने डी के ऊपर प्रोजेक्ट करना है, और हमारे पास जो आया पैटर्न बेस, वो ये आया। सो A1 और AB2, अब इसमें एफ लिस्ट निकाली तो ऑब्वियसली A3 आया, बी तो है ही नहीं इसमें, B1 था तो वो फ्रीक्वेंट नहीं होगा। ठीक है, तो नल। सो अब ये हमारे पास एक, ठीक है, सो द फ्रीक्वेंट, अब ये पाथ हमारे पास कंप्लीट हो गया, इसमें हमको ए मिला। इसका मतलब है कि ऊपर हमको पता था DE3 है और यहाँ AB3 है, इसका मतलब ADE भी 3 है। वी कैन ग्रो दिस। ठीक है, अब ये हमने इस सेकंड लेवल पे हमने
डी पे प्रोजेक्ट किया था, अब हमने बी पे करना है प्रोजेक्ट। ठीक है, अब वो भी 3 था तो BE3 होगा। तो दिस अगेन A3 आया हमारे पास, A3। तो इसमें आप ABE3 और आपके पास BE3, आपके पास पैटर्न जनरेट हो गए। अब ए आपके पास लास्ट आ गया, ए वहां 4 था, ई भी 4 था, तो AE ऑब्वियसली 4 होगा। इसमें कुछ भी नहीं निकला, कोई पैटर्न बेस नहीं था, इसका मतलब है कि हमारी ये रिकर्शन खत्म होगी। फ्रीक्वेंट पैटर्न AE निकला, और देन वी रिकर्स बैक टू द प्रीवियस, जहां हमने ई से शुरू किया था। E4 भी हमने आउटपुट कर दिया, एंड देन वी गो टू द ओरिजिनल लेवल पे। हम शुरू किया था सी से, फिर ई पे आया, फिर आगे ए आएगा। ठीक है, A5 हम ऊपर लेवल पे चले गए हम। रिमेंबर, पहले हमने ऊपर लेवल से शुरू किया ई पे, वी हैड टू गो डाउन टू द नेक्स्ट लेवल, फिर वापस वो कंप्लीट करके वापस हम ई पे आए, फिर ई से वापस हम नेक्स्ट पे चले गए, ए पे। तो ये इस तरह चलता जाएगा until we have found all the frequent patterns। ठीक है, सो इसमें पॉइंट्स क्या हैं? एक पॉइंट्स वही हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे। वी आर ग्रोइंग द आइटम सेट डेप्थ फर्स्ट बाय प्रोजेक्टिंग ऑन दैट आइटम सेट। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, जो डेटाबेस हमारे पास आता है वो छोटा हो जाता है नेचुरली, और उसके बाद भी हम उसको कंप्रेस कर देते हैं थ्रू NFP ट्री। ठीक है, सो दिस इज ए रिकर्सिव एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। सो इसको आपको ना एक दफा देखना पड़ेगा। दिस एग्जांपल इज एग्जांपल इन द स्लाइड्स, इट इज एग्जांपल इन द बुक एज वेल, दैट्स आल्सो डिफरेंट। एंड ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड एग्जांपल्स ऑन द वेब। सो फॉर श्योर you need to go through this algorithm once by hand, and then you should be able to understand it। ठीक है, all right, so any questions? इसमें I can maybe give a small example again, a different example, but before that, any questions? Any questions? Okay, let's say this is a small database again, or minimum count is 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे एफ लिस्ट बनाएंगे। तो समवन हेल्प मी विद द एफ लिस्ट, इसका क्या होगा? पहला ABC है, दूसरा BC है, तीसरा B है, और मेरे ख्याल से ठीक है। समवन टेल मी एफ लिस्ट क्या होगा? A कितनी दफा आ रहा है? A पहले में आ रहा है, एक लास्ट में आ रहा है, तो 2 हो गया। B आपके पास पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तो 3 दफा आपके पास आ रहा है B, और 3 दफा आ रहा है C। तो हम इनको ऑर्डर कर लें। तो हम आर्बिट्रेरली B3, C3 एंड A2, तो ये एफ लिस्ट होगी। ठीक है, अब इसको हमने कंप्रेस करना है यूजिंग ए ट्री। तो ट्री में हम हर एक ट्रांजैक्शन देखेंगे, एंड विल ऑर्डर इट इन दिस वे। ऑर्डर हमारा क्या है? BCA। तो विल स्टार्ट विद नल। तो पहली ट्रांजैक्शन हम देखेंगे वो ABC है, तो उसको हम BCA फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है,
तो B1 C1 A1, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन हम जाते हैं तो BC है। हमने इस यहाँ देखा कि हमारे पास ये शुरू हो रहा है B से, ठीक है। तो B ऑलरेडी है, तो ये 2 हो जाएगा। C ऑलरेडी है, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पे आए तो हमारे पास C है सिर्फ। तो C हमने देखा हमारे पास नहीं है, तो एक नया पाथ शुरू हो जाएगा, C1। एंड देन हम फिर आखिरी पे आए तो हमने देखा A है, A पहले था हमारे पास, नहीं सॉरी, आखिरी था CA। हमेशा हमने उस ऑर्डर में देखना है। थर्ड इज क्या था? सो थर्ड इज B, अच्छा, ठीक है। तो ये फिर 3 हो जाएगा, थर्ड B है तो। फोर्थ क्या है? AC है शायद, राइट। तो ये A से शुरू नहीं हो रहा, तो ये A हो जाएगा, सॉरी C होगा। ऑर्डर हमने उस ऑर्डर में करना है, C और फिर A1। ठीक है, सो अब ये सही हो गया। रिमेंबर जो F लिस्ट, ठीक है। सो ये आपका एक कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटाबेस। डेटाबेस वही है, बट हमने इसको कंप्रेस कर दिया इन ट्री। So you can run the FP growth algorithm if you even don't do the compression. Process वही है, you can then run it on the transactions. But of course, the original algorithm and the one that you get most benefit is you also compress it. ठीक है। अब of course इसको फिर रिकर्सिवली हम चलते हैं, we take find partitions of this database, and partition हमेशा हम लास्ट से शुरू करेंगे। तो हमारे F लिस्ट क्या थी? B C A। सो ए को हम लेके पार्टीशन करेंगे, उसमें से देखेंगे कितने हमारे पास पैटर्न्स निकलते हैं। ए जब खत्म हो जाएगा तो फिर सी से करेंगे, उसमें देखें कितने निकलते हैं। फिर हम बी से करेंगे, उसमें देखें कितने निकलते हैं, देन वी आर डन। ठीक है। सो बेसिकली रिपीट स्टार्टिंग विद A2 से टू पार्टीशन द DB। सो इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी में इसे कंडीशनल पैटर्न बेस फॉर ए, ठीक है ना। सो कंडीशनल पैटर्न बेस फॉर, मैं पे लिख लेता हूँ ये इसका पहला वाला, फॉर A2। तो ये क्या होगा? उस ट्री में देखें कहाँ A आ रहा है। सो वी हैव, एक तो आ रहा है A विद C इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, A1 था वहाँ, ठीक है। और एक है हमारे पास BCA, वो भी 1 है, सो वी हैव BC1। तो ये हमारे पास दो आ गए। अब ये हमारे पास नया डेटाबेस है, इसको फिर आप कंप्रेस कर सकते हैं, इसकी एफ लिस्ट बनेगी। तो B आपके पास 2 है और C इज इक्वल टू 1 है, C1 है तो इट्स नॉट बी एडेड, सॉरी सॉरी, B1 है, C2 है, ठीक है। या C2, सो दिस इज एफ लिस्ट। तो आपके पास B खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अपना ट्री इसका बना सकते हैं, ऑफकोर्स इसका ट्री बड़ा आसान होगा, B2 होगा सिंपली। और यहाँ से आपके पास, सिंस ये कंडीशनल पैटर्न बेस किसका था, A का था,
तो हमारे पास फिर आ गया AB2 भी आ गया पैटर्न, और ऑफ कोर्स A2 भी पैटर्न है। तो यहाँ हमारा पाथ खत्म हो गया ए का, एंड देन वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन विच इज C. So I strongly suggest कि you go over this algorithm. जो भी examples आपको मिलता है एक दो दफ़ा आपको देखना पड़ेगा. It's not that difficult, but it's a very interesting algorithm. Uh, so इसको आप ज़रूर देखें after class. अच्छा, हमारे पास टाइम हो गया 1:20. ठीक है. So so any questions? Okay. 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 Do you see this blank slide? And you need to tell me कि ये कुछ यहाँ figure बनता है कि. So let's say I try to plot a graph here. तो ये x axis है. uh, बाय द वे इसमें. ओके. ये एक्चुअली वो खुल जाता है इस पे. ऑलराइट. ठीक है. So what would be the relationship between support and runtime if you compare a priori and FP growth? So on the x-axis, let's say. All right, so I will skip this. Actually, ये कर नहीं रहा. There is some issue with the uh, layout. ठीक है. Right. Okay, so comparing a priori and FP growth. ठीक है. And for real world data sets. So let's say if you plot the computational time versus minimum support. Let's say minimum support is on the x-axis, computational time is on the y-axis. So you will get a curve for a priori and for both actually, which is kind of a thick tail curve. Matlab, if support is high, uh, the computational time would be less. But if you decrease the support, the computational time would explode. So can anyone tell me why that would happen? If you decrease the minimum support, the computational time would explode. तो इस तरह का कर्व बनेगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा इस साइड पे और एक लॉन्ग टेल होगी. So why does the computational time of the algorithm increase exponentially as you decrease the support, minimum support?
What happens if you decrease the minimum support? आपके डेटा सेट्स में क्या होगा? So if you decrease the minimum support, obviously you will find many more item sets that are frequent. लेट्स से हम ए प्रायोरी की बात करते हैं, तो लेट्स से मिनिमम सपोर्ट जब 10% मैंने रखा हुआ था, मे बी आई फाउंड ओनली 100 फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स. जब मिनिमम सपोर्ट मैंने लेट्स से 2% कर दिया, मे बी आई फाउंड 1000 frequent patterns. Or I might need multiple scans of the database, meaning that जब 1000 frequent patterns आपने ढूंढने, maybe you'll even find longer patterns. So let's say जब 100 आपने patterns ढूंढे थे, when minimum support was 10, the maximum length of a pattern was let's say 3. इसका मतलब 3 या 4 scans किए हैं. और जब minimum support आपने 2% कर दिया, maybe the maximum length of the pattern was 10. इसका मतलब है 10 या 11 scans आपने database के किए हैं. So the time required would increase exponentially. But if you compare this with FP growth में भी exponential होगा, but it's much later. तो आप जो दोनों कर्व्स जब प्लॉट करेंगे, तो एफपी ए प्रायोरी का तो पहले ऊपर चले जाएगा, एफपी ग्रोथ का बहुत बाद में जाएगा, व्हेन इफ मिनिमम सपोर्ट much lesser. So that's what I wanted to tell you about comparing the graphs of the two curves. Actually फिगर बन नहीं रही, बुक में दी हुई ऐसे फिगर, बट स्लाइड्स में नहीं है. I wanted to draw it, but somehow वो कुछ पेन चल नहीं रहा. ठीक है. So FP growth would be much better if minimum support is smaller. While for very higher minimum support, the difference between FP growth and A priori would be less significant. Okay. All right. So, so now let's move on to evaluation of patterns. And in the context of frequent pattern mining, sometimes we call these measures for evaluating patterns. We also call them as interestingness measures. ठीक है. Of course, this is actually quite more general as well. Interestingness measures, डेटा माइनिंग में जो मेजर्स होते हैं evaluation के लिए, उनको हम in general interestingness measures भी कहते हैं. Because remember, in data mining, the goal is to find patterns or models or regularities that are eventually useful to the end user. और उसको हम to highlight that, we call that measures interestingness measure. How interesting is the pattern that is found? Okay. But whatever the measure is, or whatever we call them, the idea is we are trying to evaluate our results, and we want to find the results that are best for our particular purposes. So far we have introduced two measures. Anyone remember? And both of these, I mean, we are talking about quantitative measures. Qualitative measures bhi hote hain, but those are usually used by data scientists at the end of the day, uh, based on their judgment, based on their experience, and so on. But we are focusing primarily on quantitative measures that you can use during your algorithm or your mining process. So we talked about two measures already. One is support and the other is confidence, right? And let me write a contingency table for two items. Let's say we have an item set A and B. So let's say A is an item or item set, and similarly B is an item or item set. Okay. ठीक है. अब इसको हम इसका जो to find is these measures, all these measures, we can create a contingency table.
ठीक है. सो लेट्स से ऊपर जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो ए का ले लेते हैं. सो आई राइट ए हेयर. ठीक है. एंड देन नॉट ए, मतलब आइटम सेट ए आ रहा है और नॉट टिल्डा से मैंने डिनोट किया है नॉट ए. सो दीज आर कॉलम्स और रोज में बी है और फिर नॉट बी है. ठीक है. And let me give these numbers for these cells as A, B, C and D. ठीक है. So what is A? A is the number of times that item set A and B occurs together in the transactional database. ठीक है. What is B? B is the number of times that B is the number of times that B occurs, but A does not occur. B हमारे पास राइट साइड पे है. आइटम सेट सिर्फ B आ रहा है, A नहीं आ रहा उसके साथ. So these are the transactions that contain B is the number of transactions that contain the item set B only without A, and similarly for the other values. And of course, A plus B plus C plus D is your size of transactional DB. So number of transactions in the database. ठीक है. So is this clear? So given this, what is support of AB? Can someone tell me? So how many transactions contain A and B together? ठीक है. So A are the number of transactions contain A and B together. और support generally हमारा fraction होता है. So we have to divide it by the total B, C, D. A divided by N मैं कर देता हूँ. ठीक है. Just let's say N is A plus B plus C plus D. I think previously हमने इसको T भी कहा हुआ है या कुछ और नंबर भी कहा हुआ है. But right now let's take it as N. ठीक है. So ये support हो गया. So what about confidence of A given B? इसको हम किस तरह लिखते थे? We call this as support of AB divided by support of the left hand side, which is A. So how would we write this? Support of AB is, as we saw before, A divided by N. And then what is support of A? So how many transactions contain A only? Or how many transactions contain A irrespective of the other? A हमारे पास वो कॉलम है. Anyone? जी. सो A प्लस C है. ठीक है. सो वो कॉलम हमने देखना है. A कुछ B के साथ भी आ रहा है और कुछ विदाउट B के साथ भी आ रहा है. सो A प्लस C है. सो डिवाइडेड बाय N. तो इसको सिंप्लीफाई करें कि क्या होगा? हमारे पास आया A डिवाइड बाय A प्लस C. ठीक है. सो दिस इज कॉन्फिडेंस. So similarly, confidence of B given A would be A divided by A plus B. ठीक है. तो ये दो मेजर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. What does confidence actually tell you from
you can say layman term. So let's say यही मैंने B A की बात की है. What does this rule actually tell? What this confidence value tells you? So confidence is actually the conditional probability of A given B. Of course, probability का estimate है. Of course, since we are doing on numbers, not a probability from the pure theoretical perspective. So estimate or the fractional probability or empirical probability आप कह सकते हैं. So the probability of A, sorry, of so probability of seeing A given B has occurred. ठीक है? So this is the interpretation for confidence. So is confidence correlation? So what is correlation actually? Correlation actually tracks the relationship between two items. In this case, two item sets. So in general, confidence is not correlation. So confidence is just conditional probability of one given the other. Correlation says that if one increases, the other also increases, or if one decreases, the other also decreases. Positive negative correlation. Yeah, if it is uncorrelated, if one increases or decreases, you cannot tell what would happen to the other, or you cannot predict what would happen to the other. So confidence in general is not correlation. So you should not interpret a high confidence value as correlation. So for example, let's say हमारे पास एक रूल है. So let's say रूल है मेरे पास cereal and bread. और इसका let's say मैं कहता हूँ confidence है 70%. So what is this telling us? So 70% of the people who buy bread, so 70% of the, sorry, people who buy cereal also buy bread. ठीक है ना? 70% of the people who buy cereal also buy bread. ठीक है? So this is actually kind of a conditional probability. But it's not saying कि लोग, if the number of people who buy cereal increases, they will also tend to buy more bread. It doesn't say that. So that would be given by correlation measures. ठीक है? So उसमें जो मोस्ट कॉमन कोरिलेशन मेजर है वो हम कहते हैं वो लिफ्ट है. ठीक है? बी गिवन ए. So remember we said that confidence is conditional probability. ठीक है ना? तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखता हूँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी implies A, इसको probably A given B. ठीक है? So divided by probability of A, probability of B. So this is actually lift. And as you can see from this, it is also telling about the correlation. Because if these two items are uncorrelated, numerator or denominator would be equal. The conditional probability would be equal to the product of the independent probabilities.
ठीक है ना. एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन दे आर गिविंग एन आइडिया ऑफ कोरिलेशन. ग्रेटर देन वन भी हो सकता है, लेस देन वन भी हो सकता है. ठीक है. एंड वन मीन्स दैट it is uncorrelated. In this case, we are saying this is a lift. So how does one lifts the other? ठीक है. सो इसको हमने अपने फॉर्मूला में लिखना है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, जो हमने ऊपर टेबल बनाया था. ऊपर वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज आवर कॉन्फिडेंस. ठीक है ना. तो कॉन्फिडेंस हमने कहा था, ऊपर था, हमने क्या लिखा था. अच्छा. ऊपर वाला मुझे अब याद नहीं. ए था हमारे पास A+C, और हमारे पास बी था A+B. सो वी विल हैव ए डिवाइडेड बाय A+C है. ठीक है ना. सो हमारे पास जो ऊपर आएगा, तो वो होगा ए डिवाइड बाय A+C. ठीक है. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज भी हैं. ठीक है. तो वो क्या होगा, ए का होगा, हमारे पास था A+C डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय बी का क्या है हमारे पास. बी हमारे पास है A+B. सो A+B डिवाइड बाय n. तो ये आपका लिफ्ट होगा. ठीक है. सो दिस इज ए बेटर मेजर ऑफ कोरिलेशन. एंड बट इसमें एक इशू है. आई थिंक अब टाइम खत्म हो रहा है. मे बी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास. Although this tells you about correlation, but this measure is not easily comparable across different transactional databases. उसकी एक प्रॉपर्टी हम एक प्रॉपर्टी मेजर्स की होती है कॉल्ड नल इनवेरियंस. तो ये जो लिफ्ट है, इट इज नॉट नल इनवेरियंट. सो वी डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर. सो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को मेजर्स को फर्दर डिस्कस करेंगे. एंड विच आई थिंक वी मोस्ट लाइकली वी रैप इट अप. And then we'll talk about a bit of few extensions to the frequent pattern mining algorithms. And then in a couple of lectures, we'll start with neural networks uh, with a focus on relational and time series data. Of course, neural network का focus करेंगे तो हम start basic से ही करेंगे. Frequent pattern, feed forward neural networks के बाद introduce करेंगे. Then we talk about transformers, we talk about autoencoders, and then we'll see some application with respect to relational as well as time series, and in addition to regular classification problems. ठीक है. और इसी का बेस बना के फिर आगे हम ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स भी डिस्कस करेंगे. बट मे बी दैट आई विल डिस्कस दैट लेटर इन द कोर्स. Alright, so also as you know, next class में हमारा quiz भी है. So quiz would contain all material till from the previous quiz till today. ठीक है. सो ऑब्वियसली इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था जो हमने फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग डिस्कस किया. ए प्रायरी एल्गोरिथम है, उसके एक्सटेंशन हैं, और एफपी ट्री, एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम है. ठीक है. ठीक है. सो एनी क्वेश्चंस.